بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجعلني वज़ीरन मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू हमारे 6th सेशन में for the journey of life which is a Seerah series started by Muslimahs club may Allah subhanahu wa ta'ala accept their effort और हमने पिछले 4-5 सेशंस के अंदर जो है मुख्तलिफ इवेंट्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से डिस्कस किए हैं कि जिसके अंदर हमें कुछ लाइफ लेसन्स पता चलते हैं कि हाउ एंड व्हाट do we learn what kind of behavior, what kind of personality, what kind of characteristics should we have. May Allah SWT enable us to act upon them and to follow them in the right way. And first and foremost myself, सबसे important चीज़ कि मैं खुद इस चीज़ के ऊपर चल सकूं और इसके ऊपर जो है इसको फॉलो कर सकूं जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ। तो हमने जो लास्ट सेशन किया था किसी को याद है कि हमने किस चीज़ के बारे में बात की थी? What was it that we discussed? जो लास्ट सेशन था हमारा, our last session was about the compassion and the mercy of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that how he would take care of and give attention to even the people who seem so insignificant to us. Okay? And then it was also about the patience of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the face of grief and in the toughest of situations. तो आज जो हमारा सेशन है उसके अंदर भी मैं दो स्टोरीज या दो इवेंट्स आपके साथ शेयर करूंगा. And the first event is about his forbearance. His forbearance यानी उनका बर्दाश्त, सब्र, बर्दाश्त. Forbearance क्या चीज़ होती है कि बर्दाश्त पैदा करना. Because when you are married and you are a husband and wife and Allah subhanahu wa ta'ala enable us to be good spouse, there is a lot of patience and forbearance that is needed in your life. ये एक हकीकत बात है. And the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is an example for us to follow in that situation. हमारे ज़हन में ये चीज़ आती है कि in his life, in his house, his wives would always be, it would be just perfect all the time. It would just be beautiful all the time. Yes, it was perfect and beautiful, but it had its challenges. और हमें नजर आता है कि उम्महातुल मोमिनीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी नाराज भी होती थी, आप भी उनसे नाराज होते थे, कभी आपस में डिस्कशंस भी होती थी, आर्ग्यूमेंट्स भी बन जाती थी, जिद भी होती थी. ये तमाम तर जो चीज़ें ये घर के अंदर एक हाउस होल्ड के अंदर होती है. अगर कोई शख्स ये ख्याल करे, ये सोचे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर उनके बीवियों के साथ ताल्लुकात में वो चैलेंजेस, वो प्रॉब्लम्स, वो इश्यूज नहीं आते थे जो आज हम लोग फेस करते हैं, तो आई थिंक दैट वुड बी रॉन्ग टू से. बट वी exaggerate things and we take them to the next level. But the Prophet sallallahu alaihi wasallam would try to कि उसको minimize करते उसके effects को. We see that Ummahatul Mu'mineen radiyallahu ta'ala anhuma, the wives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the mother of the believers, the mothers of the believers, would get upset with the Prophet sallallahu alaihi wasallam also, would get a little bit angry also. There might be argument also, and there might be some kind of stubbornness also. So the Sahaba radiyallahu ta'ala ajmain were also kind of surprised कि किस तरह से हो सकता है. लेकिन ये मियाँ बीवी का ताल्लुक किस तरह का होता है कि उसके अंदर इस किस्म की सिचुएशन होती है. You look at a sheikh, you look at a scholar, but you feel that he would have a perfect thing with his wife and that his wife would be the perfect wife of the world. लेकिन ऐसा नहीं होता. There's always situations where there are issues, there are challenges. But how should we deal with those issues and challenges? Patience and forbearance is what we learn from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And inshallah, I will try to cover more aspects of his life, from his marriage life, And there's a very famous book about the best of the husbands. And I did a series on that also. The best of the husbands. He was the best of the husbands. How he would deal with the challenges coming from his spouse, from his wives, and what would be his attitude towards them. तो जो मैंने यहाँ पे अभी तस्वीर लगाई थी एक प्यारी की, तो हो सकता है कुछ लोगों को इस स्टोरी के बारे में पता हो. This is a story in Sahih Bukhari with Aisha radiyallahu ta'ala anha. And what is the story? Let me take you to the hadith here and see what the story is about. We see in Sahih Bukhari, and this is a hadith from Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu. He says
that the Prophet ﷺ was with one of the mothers of the believers. And from another narration, we see that it was Aisha radiallahu ta'ala anha. But here, Anas did not feel it was right to name the mother of the believer, because when you're teaching a lesson about somebody, when you're trying to teach somebody about an experience, it is not necessary कि आप उसका नाम दें. It's not necessary कि आप उसकी identity को भी disclose करें. I'm just telling you the name because you might have this question कि you कौन सी mother of believers है. When another wife of the Prophet ﷺ sent a wooden bowl in which there was some food, तो एक वाइफ के घर आप थे और दूसरी बीवी ने जो है आपके घर कुछ खाना भेजा एक लकड़ी के प्याले के अंदर. तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये देखा और उनकी बारी है, उनके घर में आप मौजूद है और दूसरी वाइफ जो है वो उनके घर लकड़ी के एक प्याले में खाना भेज रही है, तो उन्होंने अपने हाथ से उस प्याले को हिट किया. ये वो टाइम था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ घर में बैठे थे. वो जो प्याला है वो जमीन पे गिर गया और टूट गया. The bowl fell and it broke. فانكسرت فأخذ النبي صلى الله عليه वसल्लम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पकड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके दो हिस्सों को उठाया, अल-किस्रतैनी, ठीक है ना, उसके दो हिस्सों को उठाया एंड उनको साथ मिलाया और फिर उसके बाद जो खाना जमीन पे गिर गया था उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से समेटना शुरू कर दिया. और वहां पे जो बैठे हुए साथी थे उनसे क्या कहा, गारत उम्मुकुम, कि तुम्हारी माँ हसद कर गई या तुम्हारी माँ को गैरत आ गई या तुम्हारी माँ को गैरत आ गई या तुम्हारी माँ जेलस हो गई. And that is the whole reaction that the Prophet sallallahu alaihi wasallam gave. I mean, imagine you're sitting with your friends, and I'm more about men when you're sitting with your friends, and your wife hits a bowl and the bowl falls on the ground and it breaks into pieces, and the food is spread all over the ground. And the only thing that the Prophet ﷺ does, he says that तुम्हारी माँ jealous हो गई, your mother got jealous, and then he said, कुलो खाना खाओ, और उन्होंने प्याले को जोड़ा, उसमें खाने को समेटा अपनी जमीन पे हाथ से उठा के, और फिर उन्होंने खाना खा लिया था कुलो. और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं का प्याला एक लिया, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, और उसको उन वाइफ के घर भिजवा दिया कि जिनका प्याला टूटा था. ठीक है, तो उन्होंने कॉम्पनसेट कर दिया उनको उस प्याले के लिए. ठीक है. तो इस लेसन से, इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है? एक छोटी सी स्टोरी है कि एक वाइफ प्याला तोड़ती है और खाना गिर जाता है जमीन पे, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the only reaction that he gives is that your mother got jealous. Even for the wives also, if your husband reacts in a way, maybe in front of others as well, what should be our action towards that situation at that point? Should we react in front of others? Should we start arguing in front of others? Should we start fighting in front of others? Or should we be forbearing and patient to understand that maybe my husband is acting in that way for some particular reason, for which I can talk to him later on. मैं बाद में बात कर सकता हूँ उसके बारे में, या बाद में बात कर सकती हूँ. मगर उसी वक्त रिएक्शन देना, उसी वक्त आर्गुमेंट करना, लड़ना, that is what the shaitan wants. Because the shaitan's greatest attack is to create a division between a husband and a wife. A shaitan's greatest attack is to create division between a husband and a wife, as we know from the hadith of the Rasulullah, from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, from a sallallahu alaihi wasallam. So as a husband or as a wife, a person should be more forbearing and patient towards the attitude of the other spouse कि जब वो उस तरह से रिएक्ट कर रहा है. तो एक बीवी जो है प्याला तोड़ देती है, खाना जमीन पे गिर जाता है, मेरा क्या रिएक्शन होगा? Of course, for me, as a human being who is full of faults and mistakes, I would have a reaction. I would get angry at her, maybe even, scold her, and then she would start arguing with me, and I would start arguing with her, and it will be a full situation in front of everybody. So what we learn from this situation is that अगर किसी वक्त पे आपका शौहर या मेरी बीवी या आपकी बीवी, जो भी आप हैं, वो कोई एक रिएक्शन दे जो आपको पसंद ना आए और लोग उधर बैठे हुए हों, तो उस पर सब्र करें और बाद में उससे बात कर लें. This is a very, very important lesson for me also, and something very difficult for me to control. And it is extremely important because otherwise, अगर मैं उस वक्त अपने आप को कंट्रोल नहीं करूंगा, अगर मैं उस वक्त अपने आप को रोकूंगा नहीं और रिएक्शन दूंगा मैं भी, तो she will also give a reaction or he will also give a reaction, and we can have an argument in front of others. And that is what many people do in front of their children as well. And that is what I need to fix myself about also. May Allah subhanahu wa ta'ala enable me to act on this, what I'm preaching.
That when your wife reacts in a certain way and your children are sitting there, or when your husband reacts in a certain way and your children are sitting there, if you do not show forbearance, and if you do not stop yourself from reacting also, there will be an argument, there will be a fight in front of the children. And that is not good. May Allah subhanahu wa ta'ala enable me to act on this. Ameen ya Rabbil Alamin. And may Allah subhanahu wa ta'ala make this the lesson of my life also. That now somebody reacts in front of me and there are people sitting there, I will be quiet. I will be patient. And I will be forbearing. And I will talk about it with my wife or whoever it is afterwards, alone, but not in front of the people. In front of the people, I be quiet. लेकिन हमारे अंदर ये होता है कि feel humiliated, we feel disgraced, we feel कि हमारी बहुत बेइज्जती की गई है. क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज महसूस नहीं हुई होगी? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आपकी वाइफ ने आपका प्याला वो गिरा दिया, खाना फैला दिया, तो क्या आप महसूस नहीं कर सकते थे जी मैं नाउज़ुबिल्लाह, यानी जैसे मुझे ह्यूमिलिएशन हो गई और मेरे सहाबा भी सामने बैठे हो, वो क्या बोलेंगे मेरे बारे में? But the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम did not care about that. Why? Because he knows that in a house where husband and wife living together, there will be situations where somebody would react emotionally. And that is what the shaitan wants. When they react emotionally, I have to be forbearing. It's a very, very, very important lesson. By God, I'm telling you, from a small story, a very important lesson. If you want a happy married life, if you want a happy life for your children and your family, just be forbearing. No matter what your spouse does at that point, just be forbearing. Bardasht kare. For the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Talk to him afterwards. Talk to her afterwards, but not in front of others. And do not, वो एक बंदे को emotional हुआ है, दूसरा बंदा भी emotional हो जाए, it will become a heated emotional argument. And how many families have broken apart, and how many marriages have broken apart because of this situation where the two could not hold each other and they would just start arguing with each other all the time. So that is a very important lesson. Some of the lessons that we learn from this from this hadith are also that his patience with his family, his finding excuses for the odd behavior on part of another person. See, this is also something extremely important. The Prophet ﷺ said that your mother got jealous. He did not say कि your mother आपकी माँ ने बदतमीजी की या मेरी बीवी बदतमीज है या something. No, he looked for an excuse. SubhanAllah. I mean, look at the lessons which are there in this hadith. Honestly, number one, that I should be forbearing. If the other spouse reacts in a certain way, I should be forbearing. And number two, I should look for an excuse which does not target the personality, but it targets the intention, or it targets the intention, or it targets the behavior of a person, or the reason behind the behavior could be more of something else rather than कि आप किसी के कैरेक्टर को पॉइंट आउट करें, कि किसी के कैरेक्टर को आप पॉइंट आउट करें. तो दो लेसन्स बड़े इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हैप्पी मैरिड लाइफ. Number one, forbearance. And talk to your husband afterwards. Yes, show your complaint and he will listen to you, I can tell you that. But at that moment, they might not listen to you. At number two, find an excuse which is not about the character of the person or about the person themselves, but look for an excuse for the intention of the person. Very important. I want you to write this down, and it's just hold on to it, and may Allah subhanahu wa ta'ala enable me to act on this, Ya Rabb, Ameen. Allahumma ja'alni minhum, to make me one of them who act in this way, forbearance, and then find an excuse for why somebody is reacting that way to their intention, not the character. या आदमी की personality में ना जाए, या उसकी personality को बोले बदतमीज है, ये झूठा है, ये चोर है, ये खराब है, ये गंदा है, ऐसे अल्फाज ही बोलना है. और ये बोलना है कि maybe your mother got jealous, maybe this person got jealous, maybe this person got frustrated, maybe this person was angry, maybe this person was tired, maybe this person was exhausted, maybe this person is just worried or concerned. So all these kind of excuses you should try to think about, right? Any questions or any comments, आप मुझे बता दीजिएगा. Otherwise, I can move on to my other lesson or other event, which I have to cover today, inshallah. Okay. So the next story that we will cover is the camaraderie, or the camaraderie of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Camaraderie का मतलब क्या होता है?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन उर्दू, और इसका मतलब क्या है इस लफ्ज का? इस लफ्ज का मतलब है रिलेशनशिप बनाना, साथियों के साथ जुड़ के रहना, रिलेशनशिप बनाना या साथियों के साथ जुड़ के रहना, इस लफ्ज का ये मतलब है। And you find the example of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where he would tightly connected in relationship and would be appreciative of people. So what happens? Let me tell you a hadith, which is also in Sahih Bukhari, that when the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when the Prophet sallallahu alaihi wasallam went for Ghazwa Hunain, और ग़ज़वा हुनैन आपको पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी हिस्से में हुआ फतह मक्का के बाद। तो ग़ज़वा हुनैन happened after the Fatah Makkah, in the last parts of the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, right? It was around the same year when the Fatah Makkah happened, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam had a battle in Hunain, right? और उस बैटल के अंदर शुरू में मुसलमानों को तकलीफ हुई, परेशानी हुई और मुसलमान हारते हुए नजर आए, लेकिन फिर बाद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों को फतह दी। When the battle was over, the enemy, जो दुश्मन है, वो अपने साथ बहुत सारे जानवर, औरतें, बच्चे और लोग लेकर आया हुआ था। तो जाहिर बात है उस जमाने में जब कोई जंग हारता था तो उसका जो सामान है वो माल गनीमत बन जाता था, और उसकी चीजों पर जो जीतने वाली फोर्स है वो कब्जा कर लिया करती थी, जो जीतने वाली फोर्स है वो कब्जा कर लिया करती। इसी तरीके से जब उन कुफार को भी शिकस्त हो गई, उन कुफार को भी शिकस्त हो गई, तो उन्होंने जो है वो अपनी चीजें छोड़ के भाग गए, अपना सामान, अपनी खवातीन, अपनी चीजें, अपनी फैमिली वगैरह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर्मी टुक ओवर ऑल दोस थिंग्स, एंड देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारे जानवर, गाय, ऊंट, बकरियां और बहुत सारे जानवर जो है वो मुसलमानों के हाथ में आ गए। अब एक्सपेक्टेड ये होता है कि जो कमांडर ऑफ द आर्मी है वो तमाम लोगों में इक्वली इसको डिवाइड करेगा, एक्सपेक्टेड ये होता है, राइट? लेकिन व्हाट इज द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड, और इक्वली डिवाइड करेगा या एक सर्टेन क्राइटेरिया के लिहाज से डिवाइड करेगा, लेकिन एंड दिस इज द एक्सपेक्टेड थिंग, बट इट इज नॉट नेसेसरी। द कमांडर हैज द राइट एंड द अथॉरिटी टू डू व्हाट ही विल्स टू डू। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारा सामान, वो सारे जानवर, जो सारा वेल्थ है, वो उन लोगों को दे दिया जो अभी नए नए मुसलमान हुए थे मक्का के फतह होने के बाद। तो जब मक्का फतह हुआ तो बहुत सारे लोग मुसलमान हुए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारा सामान जो है, वो सारे जानवर, सब चीजें जो नए मुसलमान हुए थे मक्का में, उनको दे दिया। और अंसार को, जो मदीना में अंसार थे, अंसार आपको पता ना कौन थे? द हेल्पर्स, द वंस हु हेल्प्ड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन ही माइग्रेटेड टुवर्ड्स मदीना। तो अंसार को कुछ भी नहीं मिला, अंसार को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी नहीं दिया। एंड द अंसार गॉट अपसेट, ऑफ कोर्स यू फॉट अ वॉर, यू गॉट इंजर्ड, और आपको उसमें से कोई भी चीज नहीं मिलती, तो ऑफ कोर्स यू फील काइंड ऑफ यू फील एजिटेटेड एंड यू फील अपसेट। तो अंसार भी अपसेट हुए, और ये जब अंसार अपसेट हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये खबर पहुंची। अब कोई और लीडर हो, कोई और कमांडर हो, वो क्या करेगा? वो कहेगा सो व्हाट, यू नो, वो कहेगा सो व्हाट, दैट वाज माय डिसीजन, दे हैव टू जस्ट एग्री टू माय डिसीजन। बट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अ रिलेशनशिप, had a loving relationship with the Ansar, the people who supported the Prophet sallallahu alaihi wasallam when he migrated to Medina. The Prophet sallallahu alaihi wasallam को जब पता चला कि अंसार अपसेट हुए, कि उनको कुछ भी नहीं मिला, और जाहिर बात है उनको उसके लिए कोई रीजन भी नहीं दी गई, तो Prophet sallallahu alaihi wasallam called a meeting with them. So he called the Muhajirin Sahaba, जो बड़े सहाबा हैं बहुत, like Abu Bakr, Umar, Usman, Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhum, and the senior Sahaba, he called them. And he also called the Ansar. And he had a meeting with the Ansar. And what did he say to the Ansar? Beautiful words that you see from the Ansar. He said that I see that you're upset that I have not given you anything. That I've given everything to the new Muslims. So they were quiet. There was no reaction. So the Prophet ﷺ asked them few questions. उन्होंने क्या पूछा उनसे? उन्होंने कहा, क्या मैं जब तुम्हारे पास आया तो तुम लोग आपस में डिवाइडेड थे, मेरे जरिए अल्लाह ताला ने तुमको छोड़ा? तो उन्होंने कहा, बेशक अल्लाह उसके रसूल के फेवर्स हैं। फिर उन्होंने कहा कि मेरे जरिए अल्लाह ताला ने तुम्हें रिचनेस दी, तुम्हें अमीर किया। तो उन्होंने कहा अल्लाह उसके रसूल के फेवर्स हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोगों को ईमान की दौलत अल्लाह ताला ने मेरे जरिए दी। तो उन्होंने कहा, बेशक अल्लाह उसके रसूल की ये फेवर्स है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये फेवर्स अपने गिनने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम मुझे कोई जवाब नहीं दोगे? तो उन्होंने कहा कि जी अल्लाह उसके रसूल की फेवर्स है, हम क्या जवाब दें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम भी मुझे कह सकते हो
और मेरे एहसानात जो तुमने मेरे ऊपर किए गिनवा सकते हो। और एक और रिवायत में आता है कि तुम ये कह सकते हो कि आप हमारे पास बिल्कुल अपने मुल्क से निकाले हुए आए और हमने आपको पनाह दी, हमने आपको अपने घर दिए, हमने आपने अपने पास को रखा, हमने आपके खातिर जंगें लड़ी, कुर्बानियां दी, ये तुम कह सकते हो। तो वो खामोश रहे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको क्या बोला? एंड दिस इज समथिंग फॉर अस टू अंडरस्टैंड, वी हैव रिलेशनशिप। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा, वुड यू नॉट लाइक, क्या तुम्हें पसंद नहीं आएगा कि जो दूसरे लोग हैं वो जानवरों के साथ और इस दुनिया की दौलत के साथ अपने घरों को लौट जाए? क्या तुम्हें बात पसंद नहीं आएगी कि जो दूसरे लोग हैं वो जानवरों के साथ और दुनिया की दौलत के साथ अपने घरों की तरफ लौट जाए, लेकिन तुम ए अंसार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने घरों को लौटो? क्योंकि उनको ये खौफ था कि अब मक्का फतह हो गया है, तो शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आबाई घर में रह अपने आबाई शहर में रहना चाहें और मक्का में रहना चाहें, और शायद अब वो मदीना मुनव्वरा ना जाए। तो एक उनको ये भी डर था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम क्या चाहते हो कि दूसरे लोग दौलत के साथ अपने घरों की तरफ जाएं और तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने घरों की तरफ जाओ? अल्लाह अकबर। एंड द अंसार, they said, we are satisfied, we are satisfied. That was their love for the Prophet ﷺ. On one hand, the Prophet ﷺ is going with you to your homes, and on the other hand, the people are going with wealth to their homes. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो माल नए मुसलमानों को इसलिए दिया कि उनके दिलों को इस्लाम के करीब कर सके, ताकि उनके दिलों को इस्लाम के साथ और मजबूती से जोड़ सके। लेकिन उनको पता था कि अंसार को ऐसी चीज की जरूरत नहीं है, उनका ईमान पुख्ता है। They have been tested and tried in their faith, and they are people who have already sacrificed for the sake of Islam. तो उनको वो वेल्थ की जरूरत नहीं है। लेकिन जारी बात है, इंसान अपसेट तो फील करता है कि भाई मुझे फेवर क्यों नहीं दिया गया, मुझे क्यों नहीं पसंद किया गया, मुझे क्यों नहीं ये चीज दी गई, मुझे क्यों नहीं चूज किया गया। आज भी हम ये सवाल पूछते हैं, मुझे क्यों नहीं चूज किया गया? तो द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, what did he mention to them? The Prophet sallallahu alaihi wasallam said to them, and this is a translation of the hadith, long translation. He said that I would have been one of the Ansar, मैं अंसार में से ही होता, and if the people took their way through a valley and a mountain pass, I would select the valley and the mountain pass of the Ansar. Allahu Akbar. Yani I would walk the same path as the Ansar do. The Ansar are the shi'ar, they are the clothes which are in direct contact with the body. And the people are the zihar, that means the clothes which are not in direct contact with the body. No doubt, you will see other people favored over you. So you should be patient till you meet me at the Kausar, at the tank. And what is Kausar? It is the tank from which the Prophet ﷺ will give his followers to drink. And after drinking from that tank, the people will never be thirsty again. And this is a hadith in Bukhari, hadith 4330. What do we learn from this hadith? Amazing lesson. How much important was relationships to the Prophet ﷺ? So the Prophet ﷺ felt, number one, he had the emotional intelligence. He had the emotional intelligence. As a leader, you must have emotional intelligence. That is very important for you if you want to grow as a leader. What is emotional intelligence? It is to have empathy for others. It is to be able to understand how others feel. It is to be able to understand the situation from the view of the others. तो अगर आप बॉस हैं, अगर आप टीचर हैं, अगर आपका स्टूडेंट्स हैं, if there are people under you, you should be empathetic towards them. You should be understanding of their situation. Allahu Akbar. And you should understand what others feel. That is emotional intelligence. And that is what the Prophet ﷺ was beautiful in, as he was in all his characteristics. Sallallahu Alaihi Wasallam. So what did he do? He called the Ansar and talked to them. सबसे पहले उन्होंने अपने फेवर्स गिनवाए। फिर फेवर्स गिनवाने के बाद ये नहीं कहा, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है। उन्होंने फिर ये भी गिनवाया कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। Look at that beauty. And then he encouraged them and motivated them because he knew them. He knew their iman was so strong that it was not the wealth that would bring their iman up or down. They said that I will go with you to your homes. I will live in Medina. And the Prophet ﷺ fulfilled his promise. He did not leave Medina even after conquering Makkah. He kept living in Medina, and he ﷺ died in Medina, and his grave is in Medina. And today Medina is beloved to all our hearts.
May Allah subhanahu wa ta'ala take us there. Ameen, Ya Rabbal Alamin. So, the Prophet ﷺ loved the Ansar. And he said also a last very important message in the end. कि you will see people who will be favored above you. आपके ऊपर लोगों को फेवर किया जाएगा. लीडरशिप आपको नहीं दी जाएगी. अथॉरिटी आपको नहीं दी जाएगी. आपकी राइटफुल प्लेस शायद आपको ना दी जाए. तो हम क्या करें? आप सब्र करें. Until you meet the Prophet sallallahu alaihi wasallam at the Kausar. That is until you meet, until you are raised on the day of judgment. Be patient. Because you will see people who will be favored above you. And sometimes you will understand the wisdom behind them being favored above you. And sometimes you will not understand that wisdom behind them being favored above you. So, very important lesson number one, be empathetic towards others. Learn, try to understand the situation of others. Put yourself in their shoes. Try to understand the pain they are going through. And then try to elevate them, motivate them, encourage them to something that will make them happy. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माल नहीं दिया, आपने उनको खुश करने के लिए दौलत नहीं दी, लेकिन आपने उसके अलावा ऐसी बात की जिससे वो खुश हो गए. इसी तरीके से अगर एक बच्चा आपसे जिद कर रहा है या घर का फर्द या फैमिली मेंबर आपके साथ जिद कर रहा है, कोई और मामला है, तो उसकी मामले को समझने की कोशिश करें. And you don't have to give them what they want or what they are upset about, but you can say few words. You can say few words which will uplift them, which will elevate them. That is the power of the words. तो कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि हर शख्स के नखरे पूरे करें, हर शख्स की डिमांड पूरी करें, नहीं. लेकिन कम से कम आप लोगों को अच्छे अल्फाज कह सकते हैं, उनकी तारीफ कर सकते हैं, उनको इंकरेजमेंट दे सकते हैं, उनको पॉजिटिविटी दे सकते हैं ताकि वो इंकरेज्ड फील करें. बानिस्बत इसके कि उनको डांटें, उनको नीचा दिखाएं, अपने एहसान उन पे जताएं, अल्लाह अकबर, उनको इंकरेज करें, उनको मोटिवेट करें कि वो अच्छा महसूस करें. So what are some of the lessons that we have learned today? Some of the lessons जो यहाँ पे मैंने लिखे हुए भी हैं, इस हदीस है और मैंने इस पर डिस्कशन भी आपके साथ की है. Practicing emotional intelligence by putting oneself in the shoes of the others, as I said. Emotional understanding of people and responding to them with emotional connectivity. Not reacting to the statement of others, but understanding their feelings. Allahu Akbar. Having positive assumptions. Addressing the matter immediately, not delaying when misunderstanding arises. Showing the positive side of all aspects and lifting the morale and motivation of the people through positivity and hope. हमने क्या सीखा इन दो अहादीस से? नंबर वन, जब कोई रिएक्शन दे आपके साथ, खास तौर पे आपका शौहर या आपकी बीवी, be forbearing and try to find an excuse behind the intention, not the person. And do not react at that way, and talk to them about it separately, alone, when you are with them, so that there is no commotion or argument at that point, and find an excuse for their intention. 2 points, forbearance and finding an excuse. 2 points. And then number 3 from the second hadith, emotional intelligence, emotional connectivity. Put yourself in the shoes of others and understand what they are feeling. And number 4, motivate people, elevate people through your words. Motivate people and elevate people through your words. Very 4 important lessons. By Allah, if I can adopt these practices in my life would change and it will become beautiful. If I could be forbearing, if I could have good excuse for somebody, if I could understand the emotional state of others and find an excuse for the behavior of somebody, and if I could encourage and motivate others, I will have a beautiful life and a very, very good life. These are one of the few things that you learn from studying the life of the greatest man who ever lived on the face of the earth, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the most beautiful person, the best of all characters, the mercy for all mankind, the most perfect personality, the most beautiful creation and perfect creation of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala enable us to see the Prophet sallallahu alaihi wasallam. May Allah subhanahu wa ta'ala provide us the companionship of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in paradise. Allahumma inni as'aluka murafaqatan Allahumma inni as'aluka murafaqatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jannatul khuldi. Right? May Allah subhanahu wa ta'ala give us the companionship of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the ever abode of paradise.
enable us to see him smile, and also try to live our lives as much as we possibly can as per his life, inshallah ta'ala. So may Allah subhanahu wa ta'ala enable us to act upon this, and first and foremost, enable me to act upon this. Jazakallah khair. If you have any questions or comments, we can take that. Otherwise, we can close the session, inshallah ta'ala. Right? سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته